Hello and welcome to this week's episode of Goa Ahead. And the matter that we are discussing in this week is a very crucial one. Kanada Mahasang announced that they will contest panchayat elections in Goa, and they said that they will put their own candidates. This led to a huge controversy. Goa is a small state with a very, very limited population. And suddenly, when somebody from other state, and that too under a banner of Kanada Mahasang, decides to contest elections, it leads to huge controversy. What is this controversy about? Of course, constitutionally, everybody is free to contest an election anywhere in the country. However, whether this kind of a step would lead to some social disharmony, whether this is a politically correct move, and why an organization, a political party like Revolutionary Goans, which espouses the cause of native population and Goinkars, as we call ourselves, is very, very staunchly opposing this move. I have with me in the studio leader of Revolutionary Goans, Manoj Parab. Manoj, welcome. Yes, thank you. Manoj, first, and I think the very, very usual question that Constitution gives right to every person to contest an election. Now that the Kanada Mahasang has said that they are going to contest, you went very, very bitter and aggressive against them. Now they have said that they are not going to put up any panel under that banner of Kanada Mahasang, but they will contest elections just like other Goans, and they will contest the election as Goans. How do you respond to that, and why did you oppose them in the first place? मैं हिंदी में बात करूंगा ताकि मैक्सिमम जो व्यूअर्स है उनको समझ में आए। ये जो कन्नड़ महासंघ ने जो कंट्रोवर्सी चालू की है कि आपके मीडिया में पहला उन्होंने बाइट दिया था कि वो कन्नड़ महासंघ के पैनल पे वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन अभी लोगों के प्रेशर के बाद या सोशल मीडिया, न्यूज़ मीडिया या सबके प्रेशर के बाद अभी उनका जो कल स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि वो गोवन करके इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। और अखिल गोवा कन्नड़ महासंघ के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि उनका जो स्टेटमेंट था वो मिसकोट किया है या मिसअंडरस्टूड हुआ है। लेकिन हम उनको ये माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि ये जो उनका स्टेटमेंट था वो क्लियर कट स्टेटमेंट था, वो एक दो मीडिया में उन्होंने दिया है। और अभी प्रेशर के बाद, गोवा के लोगों के नाराज़गी के बाद अभी उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया है। और चेंज करते वक्त ये टाइम भी वो गोवा के लोगों को वो झूठा साबित करने में पड़े हुए हैं। वो क्लियरली बोल रहे हैं कि हमने मिसकोट किया है या गोवा के लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है। जब हमको संविधान राइट देता है इलेक्शन कंटेस्ट करने के, हम ना नहीं बोल रहे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे वोट बैंक हो रहा है या ग्रुपिज़म हो रहा है या बाहर से आके यहाँ पे इलीगल सेटल होके इलीगल वोट बैंक करके यहाँ पे जो गोवा के लोगों के आइडेंटिटी पे जो वार हो रहा है, उसके खिलाफ हम हैं। और ये कन्नड़ महासंघ जो खुद को अभी गोवन करके इलेक्शन कंटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट सवाल है हमारा कि आप खुद को अगर गोवन या गोयकार मानते हैं तो आपका अखिल गोवा कन्नड़ महासंघ एक ग्रुप शुरुआती कैसे हुआ? अगर आप गोवन मानते हो खुद को, आपको गोयकार मानते हो, तो ये ग्रुप की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि आप खुद को गोवन मानते नहीं हो, लेकिन जब आपको कुछ प्रॉफिट चाहिए या कुछ बेनिफिट चाहिए तब आप खुद को गोवन बोलते हो, नहीं तो आप अपना कन्नड़िगा या आपका कन्नड़ जो ओरिजिन है वही गोवा में यहाँ पे हमारे ऊपर लाद रहे हो। और हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस या हमारा जो कल्चर है आइडेंटिटी, उसका जिनोसाइड करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। बट मनोज, सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली दे हैव अ राइट टू कॉन्टेस्ट एंड यू आर टेलिंग देम दैट वी विल नॉट अलाउ यू टू कॉन्टेस्ट. Don't you think this is kind of unconstitutional and comes from a very, very different perspective and a kind of a threat from your side that if you contest this election, we will show you what we can do? हमने ऐसा नहीं कहा है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करने हम नहीं देंगे, लेकिन हमने कहा है कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करो, आपकी जगह हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि अगर हम कर्नाटक में जाएंगे तो यही कन्नड़ लोग हमको वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए देंगे नहीं। हम एज अ गोवन, हमारा हॉस्पिटलिटी जो कल्चर है या लोगों को हमारे इसमें हमारे घर में लेने का जो हमारा जो कल्चर है, यही कल्चर आज हमको महंगा पड़ रहा है।
आज हम अगर दूसरे स्टेट में जाते हो तब इंडियन की बात नहीं होती है, लेकिन जब बाहर से कोई गोवा में आता है तो इंडियन की बात होती है, भारतीयता की बात होती है। लेकिन हम जब जाते हैं तो वो सब इंडियन, वो सब प्लेज है, वो सब भूल जाते हैं। तो हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी या इनजस्टिस जो हो रहा है उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। और जो कन्नड़ महासंघ ये ग्रुपिज्म करके कन्नड़ लोगों को इकट्ठा करके इलेक्शन कंटेस्ट करने की जो बात करे, इसके खिलाफ हम हैं। और ये उसको जो नतीजा है वो ये पंचायत इलेक्शन में हम उनको 100% दिखाएंगे। और उनको हम ये भी बोलने जा रहे हैं कि आप जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो, पहले तो आप जो कन्नड़ लोगों की बात कर रहे हो, कन्नड़ लोग, बहुत से कन्नड़ लोग यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं, इलीगली उन्होंने लैंड एंक्रोच किया, इलीगल धंधा कर रहे हैं, इलीगल वोटिंग कार्ड कर रहे हैं, बहुत से ड्यूअल वोटिंग कार्ड है। हमने लास्ट इलेक्शन के दौरान हमने बहुत से इलेक्शन कार्ड कैंसिल किए। तो ये बुनियाद आपकी जो बुनियाद है वही इलीगल है। और ये इलीगल बुनियाद के ऊपर आप अभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने की बात कर रहे हो। पहले तो कन्नड़ महासंघ ने हमको बताना चाहिए, गोवा के लोगों को बताना चाहिए कि एज अ कन्नड़ लोग आपने कितने लोगों को रजिस्टर किया है, कितने लोगों का आपने देखा है कि वो लीगली रह रहे हैं या झोपड़पट्टी बना के रह रहे हैं, कितने लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल है, कितने लोगों पे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, या कितने लोग यहाँ पे ड्यूअल वोटिंग कार्ड या इलीगल वोटिंग कार्ड करके रह रहे हैं। ये सर्वे तो उन्होंने किया नहीं, ये सब इलीगल करके अभी वो गोवा के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो उनकी संख्या भी बढ़ रही है और वो अभी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनने जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम हैं, इसके खिलाफ थे, है और रहेंगे। But Manoj, question is very simple. Do you want them to contest or you don't want to? We don't want them to contest because इसका reason. But they have every right to contest. Yeah, they have every right. But अगर हम दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वो राइट हमको वो नहीं देते, तो हम गोवा वाले क्यों दे? सिंपल क्वेश्चन ये है हमारा। अगर हम गोवा बेलगाम में जाके थोड़ा बिजनेस भी करेंगे तो हमको अलाउड नहीं है, वो लोग हमको करने नहीं देते, तब कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं होती है। लेकिन गोवा में आने के बाद ही पूरा सबको कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है, इंडियन होने का सबको ये होता है, एक प्राउड फीलिंग आता है। लेकिन गोवा के लोगों को वही बेनिफिट दूसरे स्टेट में नहीं मिलता है। तो हम उनको यही बता रहे हैं कि आप हर बार बोलते हो कि काम करने के लिए माइग्रेंट चाहिए और कुछ करने के लिए माइग्रेंट चाहिए, तो ये काम करने के लिए चाहिए, ये हम भी जानते हैं, हम लॉज भी जानते हैं कि इसके माइग्रेशन का, माइग्रेंट इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर का लॉ क्या है, लेकिन वो लॉ को कभी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो आज माइग्रेंट लेबर करके जो अब आए थे, आज हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनने, वो भी इलीगल वोट बैंक के पावर पे, तो ये हमको तकलीफ है। अगर आप लीगली आते, लीगली रहते, गोवा के आइडेंटिटी के साथ, गोवा के कल्चर के साथ आप खिलवाड़ नहीं करते, तो एक बार हम सोचते कि बाबा इनको चांस दे दे या नहीं। लेकिन अभी जो आपने किया है, हमारा कल्चरल जिनोसाइड किया है और गोवा के लोगों का आइडेंटिटी पूरा खत्म करने की बात आप करते हो। गोवा में आप कन्नड़ भवन मांगते हो, हमारी मादई रिवर आपने चुराई है, उस पर आप बात नहीं करते हो। तो इसके कारण हमको तो नहीं लगता कि ये लोगों ने यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए। Using some harsh words like cultural genocide, but the question is that you raised one very valid and important point is about this vote bank politics, that in a small constituencies like ours, कि अगर किसी की एक छोटी सी भी वोट बैंक बन जाती है तो that vote bank becomes a deciding factor in our election. I want to, you mentioned it briefly that the work that you did before this election about getting the fake voters or the dual voters cancelled from our electoral roll. What was the number that you have been succeeded to get cancelled from the election commission, and what do you think is the total number of such kind of voters as far as Goa's electoral roll is concerned? Tell us both, what work did you do, what did you find, and what needs to be done? जब हमने आमचे मतदार करके एक इनिशिएटिव था वो चालू किया था, उसमें हमने एक ही एक्सरसाइज किया कि हर जो रोल, हर पार्ट का जो रोल था वो रोल लेके हमने स्क्रूटिनी करना चालू किया कि कितने गोवा के लोग हैं, कितने बाहर के लोग हैं, और वो बाहर के लोग हैं वो यहाँ रह रहे नहीं, उनका हाउस नंबर वहाँ पे लिखा है या नहीं, या कोई वो कुछ उसमें हमको डाउटफुल नज़र आया। तो उसमें हमने एक लिस्ट बनाई, वो लिस्ट करके हमने पूरे गोवा में लिस्ट करके हमने इलेक्शन कमीशन को दे। उसमें कम से कम हमने जो लिस्ट दी थी उसमें ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस नाम थे। लेकिन जब कैंसलेशन की बात आई तब ऑलमोस्ट मुझे लगता है हम 35,000 कुछ कैंसिल करने में हम सक्सीड हुए। उसमें ड्यूअल वोटिंग कार्ड्स थे,
उसमें ऐसी वोटिंग कार्ड्स थी जहां पे वो वोटर गोवा में रह नहीं रहा है, वो यहाँ का रेजिडेंट है नहीं, उसने इलेक्टोरल कार्ड बनाया है, वो अपने गांव में रह रहा है। दूसरा है कि यहाँ पे वो रह रहा है लेकिन इलीगली वो उसका जो इलेक्टोरल रोल में जो नाम है वो इलीगल है, वहाँ पे उसका एड्रेस मेंशन नहीं है, उसका हाउस नंबर मेंशन नहीं है, वो गोवा में कहीं और जगह रह रहा है, उसका नाम कहीं और है। ये डिफरेंट तरह की इलीगलिटीज हमने फाइंड करके हमने जो कंसर्न अथॉरिटी है उनके पास हमने उनको दिखाया, हमने साबित भी किया। उसके बाद में हमारे लड़कों ने हियरिंग की, वो हियरिंग में हमारे जो रेवोल्यूशनरीज है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। तो हियरिंग के बाद जब कंसर्न अथॉरिटी को पता चला कि ये वोटिंग कार्ड जो बना है वो इलीगली बना है, तो वोटिंग कार्ड कैंसिल हुआ है। तो हमने एटलीस्ट 25 to 30,000 हमने कैंसिल करने में हम सक्सीड हुए, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि कम से कम 101 या 1.5 लाख और इलीगल वोटिंग कार्ड रहेंगे 100%. So Manoj, when you say, when you mention that number like 1.5 lakh and you are saying that you already got around 35,000 cancelled. So are you saying, and this is very serious, because Goa's total voting population is around 10 lakhs, 10.5 lakhs. And if you are saying that almost 2 lakhs out of those 10 lakhs are very dubious voters, that means around 20% of our voting roll is adulterated. Yes. Is that what you are claiming? Yes. Or you are just exaggerating to prove your point? Because 20% is a huge number. Yes. यही तो चलता है, क्योंकि अगर आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी उठाए आज, अगर आप थिविम ले लो, वहाँ पे 5,500 माइग्रेंट वोटिंग कार्ड्स है, वहाँ पे कितने, उसमें से कम 40-50% इलीगल रहेंगे। आप कोरतालीम ले लो, वहाँ पे ऑलमोस्ट 17,000 है, वहाँ जुआरी नगर का वो स्लम आता है, वहाँ पे तो रिपोर्ट्स भी आए पेपर में कि 50% ड्यूअल वोटिंग कार्ड्स है। बाद में पोंडा में जाओ आप, आज रवि नायक जो जीत के आया है 13-14 वोट से अगर जीत के आता है, तो वोट बैंक वहाँ पे 10,000-12,000 लोगों की वोट बैंक बनी हुई है। आप मापसा में जाओ, वहाँ पे 12,000 माइग्रेंट वोट बैंक। तो इसकी स्क्रूटिनी होना अभी जरूरी है, क्योंकि जब हम रोल देखते हैं तो हम सरप्राइज होते हैं कि वो रोल पे हाउस नंबर या एड्रेस बिना मेंशन किए हुए वहां पे नाम एंटर किए। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये नाम बिना सर्वे, बिना उसका जगह देखे, हमको मालूम है कि कोई भी कहाँ रह रहा है तो उसका नाम रखना चाहिए, लेकिन वो कहाँ रह रहा है एटलीस्ट वो मेंशन होना है, उसका सर्वे नंबर मेंशन होना है या उसका लैंडमार्क मेंशन, कुछ तो मेंशन होना चाहिए, लेकिन वो मेंशन नहीं है। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है सेल्फ एफिडेविट। इलेक्शन कमीशन सेल्फ एफिडेविट लेता है, उनसे सेल्फ डिक्लेरेशन देता है, वो सिर्फ उनको सेल्फ एफिडेविट में लिखता है कि मेरा और किसी जगह पे दूसरा वोटिंग कार्ड नहीं है। तो मुझे लगता है ये सरासर गलत है, ये गोवा के लोगों पे नाइंसाफी है। उनका वोटिंग कार्ड, उनका नाम सब स्क्रूटिनी होना चाहिए, क्योंकि गोवा बीइंग अ स्मॉल स्टेट, यहाँ पे जो विनिंग मार्जिन है वो एक वोट से 15 वोट से 200-300 वोट पे जाते हैं। तो इसमें ये इलीगल वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आज का जो सरकार बना है, हम गारंटेड बोल सकते हैं कि आज का जो बीजेपी सरकार बना है वो सिर्फ इलीगल वोटर्स ने ही जितवा के लाए हैं। There is constitutional provisions on one side which give certain rights to citizens of India, and there are demographic realities on the other side, and that is what is causing this friction. Manoj Parab, thanks a lot for joining and putting this perspective out in the open. You have been very vociferous for the cause. We all hope that eventually the way Goa is known in the rest of the world, that needs to be preserved and protected. I think there cannot be two ways about it. Manoj, pleasure talking to you. Thank you. And now we are joined by lawyer and political analyst Cleophas Almeida Coutinho. Cleophas, welcome. It's a very tricky issue. I had Manoj Parab some time back in the studio, and Manoj has made all his spirited arguments that you know. How are you looking at this issue? Because there are three aspects to it. One is the legal aspect, second is the social aspect, and third obviously is the political aspect. How are you looking at all these aspects of this very, very complicated issue? According to me, legally it may not be possible to stop any person from contesting elections if he is on the electoral roll. It is not that people have not been contesting. In Panjim City Corporation, we have people who have got elected who are sort of migrants. In panchayats like Sankwad, Porvari, we have people who have got elected who are migrant. But the issue
this time is a unwarranted interference by the Kanada Mahasang. According to me, I do not know why there was need for them to take a stand that they would officially contest elections. See, there are so many issues in our state and in our country. We have unemployment, our economy is poor, our rupee is falling. So taking all that into account, I somehow get a feeling whether he is acting on behalf of the government to divert attention of the people so that people do not take up issues which they have to take and unnecessarily get diverted to these tactics. So I find this as a pure diversionary tactic or a political move by the Mahasang, but I can't understand the logic because people have always been contesting and winning elections wherever they are popular. And because the Mahasang is now not contesting elections, according to me, popular persons in the ward are certainly going to contest on their own independently. But the question is, and Manoj also made this point, he highlighted two crucial issues. One is the social issue. He said that our demographic is such that if you start contesting as a panel or a party from a particular region which is not in Goa, and if you start making groups of people who have come from outside Goa, it is going to lead to huge social unrest. That's point one. So let's talk about that and then go further. How do you look at it? See, for a small state like Goa, we must not get overwhelmed. This is one issue. But that not getting overwhelmed will not apply only to such issues. Like take the case of an industry which is much bigger than the budget of Goa. See, even that should not be permitted. But we have to take into consideration that our people have been getting elected in Bombay. See, our people have been getting elected in the Maharashtra Assembly, in the Mumbai Municipal Corporation. Karwar people have been getting elected sometimes in the Konkani panchayat. So this has been going on. But I would say we should not get overwhelmed. But this entire anti-migrant stand of Manoj Parab, I don't think is in proper spirit. See, there have been always groups at the national level. Akali Dal is there in Punjab. Jammu and Kashmir, we have National Conference. We have DMK in Tamil Nadu, which have been strong regional groups. But these groups... Espousing the native cause. Espousing the native cause. And the native cause has never taken the stand of anti-migrants. See, Shiv Sena did it in Maharashtra. But the sole migrant plank did not take them beyond Mumbai and Thane. Now, they required Hindutva, conversions, Bhiwandi riots, the Hindu-Muslim conflict, for them to rise up or become pan-Maharashtra party. But the regional issue... Beyond that identity politics. Beyond that, they did not grow. And despite the fact that Bal Thackeray invested so much in the organization, he could not grow beyond Bombay and Thane. Third issue is regarding the vote bank politics, and Manoj makes that point very, very aggressively. He says that politicians started creating those vote banks. These vote banks, geographically, at least in our state, are concentrated in particular areas. And he says now those vote banks have grown so big that the politician who started building those vote banks is now afraid of those vote banks, because the time is not far when the vote banks will spring up a MLA for that constituency who is not from Goa, who is predominantly a product of that vote bank. And numerically, because we have very small constituencies, it is easy for them to even get elected in the assembly. How are you looking at that political dynamic? See, he is right in the sense of not creating a vote bank or a vote bank being against the local interest. But this is not the problem of today. It has happened over a long period. See, according to me, none of us, many of us would not like to cut off links with our villages. There may be many of us who cut off the links. Like my voting is in the village. I am proud of it. I live in Margaon, but still I have kept my voting, my address, my permanent address in the village. See, I would say, like me,
there are about possibly 60-70% of the people whose voting cards are there in their native villages. Somehow that effort of scrutinizing how many voting cards you have, where exactly is your voting card, I think that aspect has to be taken care of. Because I do not know whether you remember, during the last elections to the Hubli Municipal Corporation, to the Belgaum Municipal Corporation, buses were going to Karnataka for the elections, which means that these people have maintained links there. So And it they is also there. have a voting card here. Correct. Now that is where we have to tackle. According to me, it will require a lot of homework to be done. But if somebody who is residing here and says that I wish to be here and says that my life is here, I do not know how you can stop that person from being a voter here. Last two questions. Number one, Manoj Parab claims that revolutionary Goans successfully deleted almost 35,000 dubious voters from the electoral roll before the assembly election. He also claims that a number is as high as around 1.5 lakh, more 1.5 lakh. So the total number is close to 2 lakh voters, which is around 20% of Goa's total voting population. How serious do you think, Cleophas, is this problem? No. If he says Yeah. that he has successfully deleted 35,000 from the Dubious list, voters, yeah. full marks to him. I think that is what his group has to do throughout Goa. Yeah. According to him, I am giving him full credit for this. And if about 1 lakh voters of this nature are there, then maybe he has to work with the election commission, file appropriate applications, go ahead with his agenda, and take this to a logical conclusion. Rather than you are saying that No, rebel see, the rousing whole- against the- migrants, this will see, do a lot of good. See, the whole problem is the anti-migrant stand, a very rabid anti-migrant stand, according to me, will do a lot of damage to our society And and harm our us. polity. It will harm us. Last question, Cleophas, when you look at this demographic issue, when you look at this conflict now that is taking place, and certainly now we are in the midst of that debate now, how do you see Goan society or Goan polity in next 10 years? Because we are getting overwhelmed by the numbers. Legally, constitutionally, we cannot make a distinction like that. However, this is a reality, and demographically, we are turning into a very disadvantageous position every passing day. I think there may not be solution to that issue because we are part of the country. Our citizenship is one, and then people who wish to be at a place where they work, they wish to have their voting card here because their residence is here. I don't think we can take a stand. See, no country in the world stops its residents from buying a house in their own country. I can understand this argument if we were citizens of Goa. And this is not done in Pakistan. This is not done in Bangladesh, that one person cannot settle elsewhere. This is not the done thing. And if we are accepting our constitution, if we are accepting our federal entity, then we have to live with it. But at the same time, we can all be united and face this onslaught of what he fears, an attack on our culture. I'm joined by BJP legislator Daji Sarkar. Daji Bab, welcome. This is an issue I think it is very in and around your constituency also. Kannadigas now. Tomorrow it can be Tamilians. The day after it can be somebody else. As a legislator from that area, how are you looking at this issue? No, the whole problem is the constitution has given us certain rights. So under that right, you can easily contest anywhere if you are an eligible voter of that area of that constituency. I think so. No, there is nothing which can stop you from becoming a legislator or sarpanch or panch or a councillor. But the whole problem is when you have that Kanada Mahasang tag coming in, that might create certain doubts in the minds of people. But if you are fighting as a Goan, means if you have a voter card of a Goan origin,
or if you are being staying for very long in Goa, I think so there is nothing which can stop you from contesting any elections. The second question which I was asking Cleophas Bab also is regarding this divide between Goans and non-Goans, and non-Goan numbers overwhelming a Goan constituency or a Goan electorate. As a legislator, how do you look at it? And the fears that we may have more non-Goan legislators in the assembly in the coming years vis-a-vis Goan legislators, how do you look at it? First of all, when anybody tries to contest election, he is a eligible voter. So whether he's from Karnataka or Punjab is a different thing. It is in the hands of the people whether they want somebody as a legislator. It is up to them to decide. Now, since they have been staying here for so long, so I think so you cannot deprive them. If you are eligible, if you are fitting all the norms, and if the constitution is providing you, so tomorrow anybody can contest, and anybody, it is up to the people at last to decide whether to give him a chance, whether to be make him a legislator or a councillor. Do you think we as Goans need to do to safeguard our interest? Naturally, we as Goans have to do, but constitutionally wise, now I have got a neighbor who is my immediate neighbor who has become a councillor in UK. So if he can go and contest there are many instances where Indians have become councillors or corporators, MPs in different houses of parliament in different countries. So And we are everywhere proud this about right it. is there. And we are very proud about it. Yeah, we are very proud also. Yeah. So the rules should apply to everybody in the same manner. Daji Bab, thanks a lot for joining us. I know you're traveling, but still you took out your time and joined us on the show. Absolute pleasure talking to you. Yeah. Thank you. Thank you. That's all for today. Keep watching. Go ahead.